Hey, hello everyone. Let me switch my camera. So hey everyone, this is Surya Sikre. Let's just don't waste our time on talking about rubbish thing. So let's come to the topic about sketching. See, sketching is a skill, and what skill demands? Time, practice, consistent, persistent. All these are the things which skill demands from all of us. But we are not able to give time. We are able to give time, but we are not consistent with our work. And sketching is a skill. If you really want to learn a guitar, for example, if you want to learn a guitar, you have to give time and you have to be very consistent with that. It's not like that today you play guitar and tomorrow you play, or you learn just 10 song on guitar, that how to play 10 songs, and you are becoming a very good guitarist. It's not like that. You have to be very consistent and very persistent with that, with a very discipline. So in art field, the same process goes. You have to be very disciplined with your work, very consistent with your work when we talk about sketching, because sketching is the important part. Sketching is the basic. Sketching, fundamental, all these things are the basic, are the primary thing. And if you are not focusing on the primary thing, don't try to think like that you are going to be very good artist in future. If you really want to be a good artist, then your sketching, your fundamentals should be very much clear. It's not like that I'm a very big artist, or no, I'm just a student and trying to sketch every day, trying to share all my works with you all. So today also I'm making sketches. So I'm thinking that why not just come live with you all and share some of my experience, some of my teaching, some of my learnings. So here we go. Let's just not waste too much time. Let's just directly jump on the video and let's just uh, sketch. So this is my sketchbook, and here is some of my sketches. Let me just fix the camera. Here we go. These are some of my sketches. I hope the video is very much clear to all. So let me just share some of my sketches. These are the very line sketches, very quick sketches. But this one is very detailed because I want to learn about the things which is very important, like the lines and all the things. You can see here how fine lines I'm making with. And let me show some of more sketches of mine. This is a very easy, or what we can say, a figurative human study. This is a study of muscles. This is a study of human anatomy. These are the practice. This is very important thing that you have to practice daily, like this and like this. You have to just practice with shapes. Why? Because shapes are the fundamental things. And if your fundamental is not good, then don't think that you are going to be very become a very good artist or good at sketching thing. So these are the fundamentals, and these are the some of the line sketches which I often tell to the my juniors or everyone to keep make sketching like this. This is a line sketching, which is again very much important, and this is again a sketching with light and shadows. Just trying to learn the light and shadows very quickly. And again, this is a line sketching. So there, here are some of my sketches. These are some of my sketches. Let's just make sketch. So this is a reference from my phone, and we are going to make this reference. I hope the reference is very much clear to you. Let's just start. I'm starting the sketch with a circle, because why circle? Circle is a very basic thing. Making the face here, just like this. This is the ear. So here I'm making very rough sketch, trying to understand all the fundamental things like lips, nose, and all the things. There's the hand, just a rough drawing. Then we are going to finalize this rough drawing.
This process is very important. You just have to keep the step of the process in your mind. This is a very rapid, quick sketch before we convert a very finalized sketch. So this is the process. Ansuman. Hello, Surya. Nice to see you live. We meet a long time back in Jabalpur. Hey, thank you so much. Nice to meet you too. So here I'm drawing the eyes and the nose. I'm not matching all the face structure and all the thing. Just here I'm trying to match the light and shadows, something like this. And you can see how fast I am trying to sketch here, doing very quick line drawing. And now the old rough line which I have drawn here, now I am making perfect line with the rough lines, something like this. Don't fear with this pencil and with this paper. Always try to remember this thing. Keep this thing in your mind. The more you fear, the more difficult difficulty you will face. जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा पेंसिल पेपर आपसे उतना ज़्यादा दूर भगता जाएगा। पर हमें इनको दूर नहीं भगाना है, इनको पास बुलाना है। तो पास बुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है that you have to keep spending time with your pencil and a paper. That's how you will see growth. And please stay consistent with your work. ये ऐसा नहीं है कि आपने आज 50 स्केच कर दिए, कल 20 स्केच किए और उसके बाद एक भी स्केच नहीं हुआ। This is a skill and skill demand a lot of time. So this is how we are drawing with a very rough or very quick approach. And I'm not focusing into shadings and all. Why? Because the primary thing, the primary thing is the fundamental and what? Sketching, the outline. Sketching or outline is the fundamental thing, is the very primary or basic thing. और सेकंड दूसरे नंबर में क्या आती है, जो हमारे लाइट एंड शेडोज रहती है, लाइट एंड शेडोज, दिस इज आर सेकंड प्रायोरिटाइजिंग थिंग। और जो थर्ड चीज रहती है, देन वी कम इनटू द कलर एंड ऑल द थिंग्स, बट हियर वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द फंडामेंटल थिंग। सो आउटलाइन बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि शेडिंग हम कर सकते हैं, शेडिंग हमें पता है ये डार्क है, फिर धीरे धीरे लाइट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे और ज्यादा लाइट हो जाएगी। दिस इज द शेडिंग प्रोसेस। But we have to focus on what? We have to focus on outline because outline is the most important thing. Outline come under fundamental thing. So outline जितनी अच्छी होगी, shading एक बात का process रहता है। Shading हम कभी भी कर सकते हैं, but outline is very important thing. So this is a sketch, very rough sketch. Shading तो यहाँ पे 2 मिनट में अगर मैं इस तरीके से पेंसिल चलाऊंगा, यहाँ चलाऊंगा, थोड़ी बहुत यहाँ पे चलाऊंगा, जिस तरीके से हमारी रेफरेंस में दिख रही है, तो वो अपने आप पॉप आउट हो जाएगा, स्केच अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा रियलिस्टिक में। पर this is just a time waste thing. I'm not saying if you really want to improve your fundamental thing, then you have to focus on your outline. Don't waste your time on the shading thing. If you really want to do a shading part, then please separate your time for the shading part where you are just focusing on the shading things. Let me show some of my sketches where I am practicing with shading, just like this sketch. This is a very quick line sketch, and at the same time, I'm learning how to apply a very dark tone and just trying to divide light and shadow. This is shadow part and this is light part.
But this is our secondary thing. The first thing is a fundamental, and the second part is what? The light and the shadows. This is the second part. But we have to focus on the fundamental thing, right? So here we make our first sketch, and let's just find the second one. So I'm trying to find here some kind of a complicated sketch, complicated drawings where we can learn so many things in a very less time. Why less time? Because here we are making quick sketches. We are making a face with a very quick, rapid approach. Just don't, please don't dive into making the outline of the eyes and all the things. फीचर्स यहाँ बनाते हैं, जो फीचर्स है उसको बनाते हुए यहाँ पे नहीं बैठना है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत हमने फीचर्स बना दिए हैं, वो लाइट एंड शैडोज और थोड़े बहुत कैरेक्टर को समझने के लिए। पर यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरा फिगर्स की। जैसे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे वी आर प्रैक्टिसिंग द फिगर्स। सो हमको फिगर्स पे ध्यान देना है, अपनी लाइन्स पे ध्यान देना है, स्केचिंग पे ध्यान देना है, फीचर्स पे ध्यान नहीं देना है। सो हियर अगेन, जस्ट मेकिंग अ वेरी rough drawing to understand the very quick thing, something like this. एक बहुत ही रफ वे में चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे मैं डायरेक्शन दे दूंगा, सिर्फ डायरेक्शन दे दूंगा कि इस तरीके से इधर इधर ऐसे हाथ जाएगा, इधर ऐसे यहाँ पे कमर और ये सब आ रहे हैं इसके एप्स वगैरह, और यहाँ पे इसकी हैंड की डायरेक्शन ऐसे मूव हो रही है। दिस इज जस्ट अ डायरेक्शन। नाउ वी आर फाइनलाइजिंग दिस थिंग। इसको कुछ इस तरीके से, जैसे पंचिंग ग्लव्स होते हैं उसका डायरेक्शन देते हुए, थोड़ा सा डिटेल में देते हुए इस तरीके से। यू कैन सी हाउ फास्ट आई एम ड्रॉइंग हेयर। The more you draw fast, the more your skill will polish. I'm uh, reading a book, and in that book, the quote is written over there: polish today, polish yourself today, and shine tomorrow. The more you polish your skill, the more it will shine tomorrow. Sorry for the disturbance. जितना आप पॉलिश करेंगे अपनी स्किल को, उतना ज़्यादा आप साइन करेंगे, आपकी स्किल साइन करेगी। आप तो साइन करेंगे साथ में ही, क्योंकि मेहनत तो आप ही की है। तो बस स्केचेस कर रहे हो आप, जितना हो सके स्केचेस करो, क्योंकि स्केचिंग कैन रियली टेक यू फार। इतना ज़्यादा कलर पे आप फोकस करते हो कि कलर नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, लाइट एंड शैडो समझ में नहीं आ रही है, तो कहाँ से समझ में आएगी जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। मेरे से जितने भी लोग मिलते हैं, जितने लोग भी एडवाइस मांगते हैं, मैं सबको तो यही बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, ट्राई टू गिव फोकस ऑन द स्केचिंग पार्ट। कुछ इस तरीके से लाइट एंड शैडोज भी बहुत रफ वे में, जितना ज़्यादा पेंसिल डांस करेगी, जितना ज़्यादा पेंसिल मूव करेगी, डरना नहीं है यहाँ पे। अगेन आई एम सेइंग, डर को निकाल दो बाहर, चलने दो पेंसिल को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेंसिल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, शीट्स है, ये पेपर है, खत्म हो जाएंगे। तो खत्म होने दो ना, खरीदे क्यों आपने? खत्म करने के लिए खरीदे, और ये जस्ट अ प्रैक्टिस है। और हमेशा प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, फॉर द स्केचिंग पर्पस। स्केचिंग के लिए हमेशा बहुत ही रफ पेपर टाइप की यूज करें। इफ यू डोंट हैव दिस न्यूज प्रिंट काइंड ऑफ अ पेपर, देन यू कैन यूज जेरोक्स पेपर। Xerox paper is also a very good for sketching. अब जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं, तो अब इनका थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन बनाना, और how we can add these 2 figures in our drawing is a very challenging part. So let's see here how we can do this thing. Please feel free to ask anything about sketching, anything about drawing.
If you are having any kind of a query, any kind of a question, feel free to ask. Again, just a very quick rough drawing to understand the proportions, the basic of the sketching of the outline. तो जिस तरीके से यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे and just trying to connect the both figure, something like this, the face of the other guy. भैया वीपी स्केच, भैया मेरी लाइन थोड़ी टूटी है। ओके, सो लाइन क्यों टूटी है? क्योंकि आप डर रहे हो अभी भी स्केचिंग करने में। यहाँ पे चीज़ों को ना थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे। हम जब बचपन में सर्कल बनाते हैं तो हम जो कभी भी देखना, जो बच्चे लोग रहते हैं ना, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनका उनके अंदर डर नहीं रहता है, उनको बिल्कुल गोदते हैं उनको। उनको पेपर दे दो पूरा गोद देंगे। हमारे अंदर डर है कि ये अगर मैं स्केच बना रहा हूँ तो कहीं बिगड़ ना जाए, ये लाइन कहीं इधर की इधर ना हो जाए। तो आप क्यों डर रहे हो? डरना नहीं है, और मेरे को पता है क्योंकि हमारे जूनियर्स भी काफ़ी जूनियर्स हैं, जो जब ड्राइंग करते हैं तो ऐसे-ऐसे लाइन खींचते हैं। ऐसे-ऐसे आराम-आराम से इस तरीके करते हैं, तो यहाँ मैच्योरिटी नहीं दिखती है आपकी, आपके अंदर लाइन्स में आपके डर दिख रहा है। तो इस तरीके के ऐसे-ऐसे नहीं करना है आपको, इस तरीके का नहीं करना है। अगर आपको सर्कल बनाना है तो डायरेक्ट सर्कल बनाओ, और इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपकी जो लाइन टूट रही है वो क्यों टूट रही है? क्योंकि आप डर रहे हो। तो डर को तो सबसे पहले, जो आपका फ़ियर है, उसको अपने दिमाग से निकाल दो। और दूसरी तरफ हम आते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारे सर्कल्स की। देखो, मैं ये प्रैक्टिस जब मैं फ्री बैठे रहता हूँ कॉलेज, कहीं पे भी फ्री बैठे रहता हूँ, तो मेरे पास हमेशा एक पेंसिल, एक नोटबुक और मेरे पास कटर हमेशा रहता है। फ्री बैठे-बैठे मैं इस तरीके के 100 सर्कल इस डायरेक्शन में एंड 100 सर्कल on the opposite direction like this. This is the practice, and you can practice like this. आपको infinity का साइन बनाना है on the different direction, और दूसरी बार डिफरेंट डायरेक्शन। ये 100-100 बार आप करोगे तो आपके जो लाइन्स है, आपके जो हैंड्स की जो कलाई की जो मूवमेंट है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो आपको डर है वो इम्प्रूव, मतलब वो दूर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यू कैन इम्प्रूव ऑन योर स्केचिंग पार्ट। और फिर जब ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आती हैं, आप देख सकते हैं जैसे ये छोटी-छोटी लाइन्स आपको बहुत सारी दिख रही होगी। तो मैं क्यों बिना डरे लाइन चला पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने उतनी प्रैक्टिस किया हूँ इस चीज़ में, इस तरीके से। ये रफ ड्राइंग है, क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे गलती से पेंसिल भी चल गई है, पूरा स्केच खराब हो जाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। सीट मेरी है, पेंसिल मेरी है, मैं दूसरा पन्ना पलटाऊँगा, दूसरा में स्केचिंग करूँगा। व्हाई you guys are very much afraid of wasting paper, pencil? बस ये है कि बहुत मटेरियल, हैवी मतलब ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल मत यूज़ करो एट द वेरी इनिशियल स्टेज। ट्राई टू यूज़ गुड पेपर। गुड पेपर means Xerox copy paper you can use, or you can use newsprint paper. So basically, I own my own stationery where I keep all the fine art material and all the things. So this is a very rough sketchbook. Yeah, please VP sketch, improve or increase your practice. The more you practice, the more you become very good at anything, because this is a skill. Sketching is a skill, and the more time you give, the more better you become at your sketching thing. This is how we are making the facial features very rapid. This is a part of the chest, something like this. Every day I try to make the sketches as much as possible, because I know the value of sketches. Because in my career, in my art field, sketches really play an important role.
to improve all over my art thing. And every time I suggest to my juniors and all the people who are asking from me that please try to use a dark pencil, darker grade of pencil, whether you can use 10B or 12B. Why? Because this 10B, 12B can give very dark version as well as middle tone as well as very light tone. So with this pencil, you can manage all the three tone, the darker version, the middle tone, and the light tone. So please try to use the dark pencil. So here, with the very confidence, with lines, this is how you can make sketching. If in the reference there are two figures, this is how you can draw very quick and very rapid drawing. तो एक प्रोसेस तो ये है कि आपको एक बहुत ही एक रफ रफ ड्राइंग कर लेना है कुछ इस तरीके की, देन यू हैव टू फाइनलाइज दैट ड्राइंग कुछ इस तरीके की। एक ये प्रोसेस हो जाती है और एक दूसरी प्रोसेस आती है जहाँ पे हम डायरेक्ट फाइनलाइज ड्राइंग करते हैं, डायरेक्ट फाइनल ड्राइंग करते हैं। एंड जस्ट लेट्स see that process, like how we can do the direct sketching. See, here's the picture, very amazing picture. So now what we are doing, again we are making a circle like this. Okay, so now what we have to do, we have to just focus on the outline, outer line of our reference like this, like this. And this is the hand. Please don't waste your time on making the fingers. We are just here giving the just giving the impression by making outline here. This is a neck part. This is a traps because this boxing man is having a muscle, huge muscle mass. That's why he is having a very big traps. And here's the shoulder, the round shoulder, and the biceps. Here's the again hand, other hand, and the part of the arms like this. The abs. As you can see, without any rough drawing, we are able to make here the outline. We can give a very quick shading to it, just like this, just to give the impression. Something like this. Very quick, rapid drawing. Right. Where's my cutter? I'm searching my cutter and I'm not able to find my cutter. Yeah, okay. So here my cutter is. So let me just sharpen my pencil to get the sharp lines. पेंसिल को घिस डालो पूरा, इतनी स्केचिंग करो एक दिन में इतनी स्केचिंग करो कि पेंसिल बिल्कुल आधी हो जाए। So now we are finding different subject. Okay, this is good. This is very much good. अब यहाँ पे ना एक बहुत ही देखो किस तरीके से यहाँ थोड़ी सी पेंसिल मैंने डार्क चला दिया हूँ, पर जब इस तरीके के क्विक जस्ट हम सजेशन ड्राइंग जब कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सजेशन ड्राइंग।
हम जस्ट एक सजेशन ले रहे हैं कि इधर से इधर और इधर से इधर ये चीज़ें आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। एक जस्ट सजेशन हो गया। अब इसको हम थोड़ा-सा फाइनल करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ये आइज़ के पार्ट हो गए, यहाँ पे नोज़ का पार्ट आ गया, यहाँ लिप्स का पार्ट आ गया कुछ इस तरीके से। ये गर्दन भाई साहब की, ये ट्रैप्स, हियर इज़ द शोल्डर एंड हियर इज़ द ग्लव्स, लाइक दिस। देख सकते हैं जब हम सजेशन ड्राइंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक मदद मिल जाती है, एक रफ़ आउटलाइन हमें मिल जाती है, फेयर करने के लिए। तो ऑलवेज़ ट्राई टू first draw your suggestion drawing, then try to finalize your drawing. Just don't direct fall into the direct your main sketch. Just look how quick I've drawn here. Right. So let's just take another picture. So again I am telling you all, the more you draw, the more your skill will be polished. And the more you polish, the more your sketch will shine tomorrow. And please don't just get confused if I'm making the sketching of these people who are fighting. Why I'm sketching? Because I love fighting. I'm a very gym freak person. That's why I'm drawing the muscles and all the kind of things, because it gives me a motivation. If you are not that kind of a person, if you enjoy whatever you enjoy, try to do sketch that thing only, like this. The very rapid approach. Here you can see how fast we have drawn here. So let's just see a quick uh, review or quick revise of our drawing. I like this sketch very much because here you can see the confidence of the line, the strength of the line, how powerful the strength and the stroke is, right? And this is also the drawing of today's. बस इतने ही sketch हुए हैं आज, ये और ये. But let's just end the video here. Why? Because the video are uh, going quite long. That's why I'm quitting this video here. But इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं स्केच बंद करूँगा। मैं अभी जाऊँगा, रात के टाइम हो गया तो अपन खाना खाएँगे एंड देन अगेन वी कम ऑन द स्केचिंग पार्ट। स्केचिंग करूँगा दोबारा से। तो जस्ट एक क्विक टूर ले लेते हैं हमारे स्केचेस के। आई लाइक दिस वन स्केच आल्सो यार। व्हाई? बिकॉज़ दिस sketch is also a very strong stroke, the strong lines here you can see, very quick light and shadows, study of a light and shadows. And I also like this type of sketches where I just give a very suggestion line and then I finalize it with a very bold strokes. Here you can see. And here you can see some of my pen sketches. Pen sketches is also a very important thing. Why? Because it can really teaches you to perfect your outline, to make your outline very much perfect. Something like this. I also love to do pen sketches. This is a portrait expression, or you can say feature study with pen drawing. I really enjoy. This is some of my stuffs, and this is a live drawing. You can see the difference between live drawing and the reference drawing.
Surely I will make a separate video and saying the difference between the live drawing and the reference drawing. This is also again a live drawing. This is live drawing. This is a live drawing. And just going to complete my sketchbook. मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ कि यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ और इसको मैं व्हाइट छोड़ रहा हूँ, खाली पन्ना छोड़ रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज़ ट्राई टू, बस ये कुछ रहते हैं क्योंकि गंदे पेज हो जाते हैं। बट आई ऑलवेज़ ट्राई टू फिल द बोथ साइड ऑफ माय पेपर। अब ये पेन स्केचेज़ हैं, जैसे ये इंक स्केचेज़ हैं, तो यहाँ इंक आ जाती है, तो यहाँ मन नहीं करता है करने का। दैट्स व्हाई आई हैव टू लीव दिस पेज लाइक दिस। ओके, अदरवाइज़ आई ट्राई टू फिल द बोथ साइड ऑफ द पेपर। प्लीज़ मेक लाइव स्केच वीडियो भैया प्लीज़। येस, येस, ऑफ कोर्स। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि लाइव जब स्केचिंग हम करने जाते हैं, जैसे कि ये है, दिस इज़ अ सब्जी मंडी एंड वी आर स्टैंडिंग, we have our group where we go on the different locations, like this is sabji mandi, and I have made a lot of sketches of the people here and there. People are moving very fast, people are really very fast with their actions. That's why I have to capture them very fast, in a very fast way. You can understand with the lines and all. This is a sketching of landscape, and this is a sketching of still object things. If your sketching is not that much good, try to focus on the object sketches. Try to focus on the object sketches. If your sketching thing is not that much good, so all the things which are very much still very much study, so you can focus on that thing. This is again a live sketch, pen live sketch. This is again pen sketch, some kind of a perspective or architectural drawing. This is my self portrait with pen. And here you can see very tight penciling. This sketching are called tight penciling sketching drawing, where we are holding pencil very tight. This is not like that. We have to just make a quick drawing with light and shadows and with a very bold lines. Here you can see the line drawing. So let's just switch the camera, and I hope you all have understand something or you learned something about this live sketching thing. Not live sketching, the sketching thing, where we have take a reference with the Pinterest and we are just making the sketches. But I just want to say that don't miss any single day. Please be disciplined with your work. Stay consistent. Stay disciplined. If you're making 50 sketches today, please try to make 100 sketching tomorrow. This quick drawing, just 1 minute drawing. If you're making 1 minute drawing every day, you basically you if you want to complete your 50 sketches, it will take just around 1 hour to complete your 50 sketches. So please focus on your sketching part. It will really help you a lot. It will take your level here to here. So this is all for today's video. Thank you so much for watching, everyone. If you like this video, please subscribe and like this video. Thank you so much for watching, everyone.